subscribe to my channel. It's free to subscribe, and also press the bell icon. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light. Hey guys, and Assalamualaikum. This is me Farwa, and today I'm here for another video, and that's this gorgeous mehendi type of look, makeup guest, and you can also guess makeup guest by शादी guest. शादी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेडिंग गेस्ट, या सॉरी आई फॉरगॉट। आप ये इजीली मेहंदी में भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपली क्रिएट हो जाता है और ये बहुत मतलब ग्लैम टाइप ऑफ लुक है। और आप हाईलाइट चेक करें, लिपस्टिक चेक करें, आई मेकअप चेक करें। सो या today's shout out goes to these peoples. If you also wanted to be featured in my next video, all you have to do is subscribe. Don't forget to press that bell icon, and don't forget and never ever forget to follow me on my Instagram. Follow me there, and all you have to do, write in the comments down below hashtag first cut and your promise. I promise you're also going to be featured in the next video. So yeah, and इस वीडियो में थोड़े मैं न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी, थोड़े मैं ओल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे बातें। तो या without any further ado, let's get on to the video. Okay, so we're gonna start off with our eyes. So for that, we're gonna use first a concealer to just make our eyeshadow look more pop. So for this, I'm gonna use this Kiss Beauty Highlight and Contour Stick. So I'm just gonna apply it. So I'm gonna just put a little, so you guys can see everything spinning around. So I'm going with this Glamour Face powder to just set up my eyes very quickly. Yeah. ये मेरे सामने पड़ा हुआ था तो मैंने ये यूज़ कर लिया, वरना a new product today to try out. So now I'm going to use this eyeshadow palette. This is Sophia Ashley eyeshadow palette, 35 colors. And अगर से फर्स्ट मैं इस शेड में जाऊँगी, आप देख सकते हैं बहुत न्यूट्रल मतलब ब्राउन टाइप का कलर है जो यूजुअली होते हैं। और मैं एक इस टाइप के ब्रश से लगाऊंगी। मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों बंद हो रही है, बट बेयर विथ मी, ठीक है। तो आई एम यूज दिस कलर ऑन माय क्रीज। उसमें मैंने ट्रांजिशन कलर लगा लिया। उसके बाद I'm gonna go in with this pencil brush. So I'm gonna use this on my eyes, and I'm gonna go in with this reddish type of color, मतलब reddish brownish. I'm mixed up about this look. This is the color. और जब मेरी क्रीज आने ना, इसको मैं ज़्यादा डिफाइन करूँगी विद दिस कलर, ठीक है। So my eyes are now sharpened up, and I'm gonna cut my crease. It's the same concealer as we used before. I'm gonna go in with it. So मेरी दोनों creases cut हो चुकी हैं. I have to blend them, but that's okay. So अब हम क्या करेंगे, glittery shimmery shadow लेंगे. I'm gonna use this palette. अब मुझे इसका नाम नहीं पता because इस पर नाम नहीं लिखा हुआ, but this is really good highlight, by the way. So I'm gonna go in with this shade right here to my eyes. तो मुझे obviously इतनी अच्छी पिगमेंटेशन नहीं मिल रही। I'm gonna use up my finger. Now
I'm gonna go in with the same brush, and I'm gonna go in with the browns, these both browns, okay, to just maintain our eye because of the white cap. Just quickly be doing that. So that's done, and lastly we're gonna go in with the same brush, and we're gonna go in with this darker brown color. Yeah, sorry, I forgot. And I'm gonna blend this. So guys, I will be back after cleaning my both eyes. So I clean my both eyes, and so I'm gonna go in with this palette, Secret Eyeshadow palette, and please ignore those voices because everybody is sleeping in my home. एक मैं ही जाती हूँ और मेरा भाई he is playing PUBG, you know. Oh sorry, मैं बताना भूल गई कौन सा शेड यूज़ कर रही हूँ. I use up this pretty type of color, this pretty green color. So yeah, I'm just gonna use this. Okay, so now I'm gonna curl my lashes very quickly. And I'll show you the difference when you curl your lashes. Just have a look. This has concealer on, so that's why you guys can't see it, but I hope you guys can see that difference. For mascara, I'm gonna go in with this Yankina 1 second volume mascara, and this is just bomb.com. This is amazing. So guys, मैंने ग्लैमरस फेस की आई शेडो पेंसिल अंडरलाइन नीचे लगा ली थी ऑफ कैमरा. ओके, सो नाउ यू गाइस कैन सी देयर इज सम थोड़ा बहुत कचरा ऑन माय फेस, थोड़ा बहुत ग्लिटर. आई होप यू गाइस कैन सी दैट, बट इट इज so for that we're gonna be using up this to remove that. We're gonna using this golden girl softest edge treatment. It's always good to do your eye makeup first, then your face makeup, because you always ended up ruining your face. Okay, so I hope you guys can see those glitter particles and a little bit dust. Look, obviously we have to moisturize our face. We cannot live otherwise your makeup will be patchy and ugh. So for that I'm going to be using this Enora Gold Serum. This was sent to me by Enora. This is a PR package, so but my honest reviews always. I'm going to shake this a little, and this is a gold serum. So I'm just going to show you. You guys can see those gold particles, right? So I'm just going to use this on your face. You have to be really quick with it. Oh. I'm going to use the same on my lips too. So today we're going to use this Sweetest Stick Foundation, and I'm in the shade Soft Ivory. आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ग्लाइड हो रहा है मेरे फेस पे, वरना मैंने इसे पहले लगा के दिखा था विदाउट एनी मॉइस्चराइजर, अपने पास ये नहीं था तब. रेडी कर. आप कह रहे होंगे कि मैंने इतनी क्यों थोपती, बस जस्ट बिकॉज इसमें बहुत कम कवरेज है, तो आप जितनी थोपेंगे उतना अच्छा है, यू नो. रियली ऑनेस्ट, रियल लाइफ में इस स्टिक फाउंडेशन की
कोई इतनी ज़्यादा ख़ास कवरेज नहीं है जितनी कैमरा पे दिख रही है. I don't know what the hell is going on. Okay, so to conceal and contour my face, I'm gonna use this romantic color contour and highlight palette. I'm gonna use my finger because brush से ज़्यादा प्रोडक्ट निकल आ जाता है. और आप प्लीज़ ये वॉइसेस इग्नोर करें. बंदा कब वीडियो बनाए, हाँ मुझे ना शो होता है. Wow, this is blending nicely on my face with my finger. मुझे फिंगर्स के साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ. And guys, इसमें कवरेज नहीं आ रही है, I don't know. So we're gonna switch up with our this stick. ये थोड़ा वाइट है ना, तो उसमें थोड़ी सी कवरेज दिखती है. For the contouring, we're gonna go in with this color, and I'm gonna use like this. तो अब हम क्या करेंगे, आई हैव a new loose powder and that's my glamorous face. आपने ये मेरे ब्लॉग में देखा होगा, so no need to tell you again. निकल जा भाई. और उसका शेड भी आप लोग को पता होगा, TL601. ओके, सो इसको थोड़ी देर, बिल्कुल थोड़ी देर हम लोग फेस पे सेट होने रखेंगे ताकि सेट हो जाए. आई थिंक आवर फेस इज सेट, तो हम लोग गो इन विद दिस डेंस ब्रश ताकि So now for moving on our contouring, because वो contouring तो obviously powder है तो set भी करना है ना. So I'm gonna use this focal layer blush and highlight palette. तो इसमें जो ये brown shade है, ये थोड़ा मतलब contouring टाइप का लगता है. किस किस को ये ब्रश याद है? I'm gonna use this flat brush. If you want you can use this brush too, by ऐसे टाइप का. इससे ना बड़ी sharp contouring होती है ऐसे टाइप्स के ब्रशेस से, तो I'm using that. अगर आपको याद है ये ब्रश किस चीज़ का है, लेट मी नो इन द कमेंट्स. ब्लेंड करेंगे हम विथ अ ब्रश, एंगल ब्रश. Now moving on to the blush, we have this Organics Beauty Villas Lip and Cheek Stain. ये बहुत अच्छा कोई लाल टाइप का कलर है. मैं बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी because it's really pigmenty. और मैं ये साइड यूज़ करूँगी. This is just so natural. Okay, अब ये हो गया. इसके बाद हम हाइलाइटर लगाएंगे. हाइलाइटर किधर गया? यहाँ ये रहा. हम फोकल लाइटर ही लगाएंगे विथ माई फेवरेट ब्रश. थोड़ा सा ब्रश को ना गीला कर देते हैं विथ माई सेटिंग स्प्रे, किस वीडियो वाला, ठीक है. एंड आई गोना गो इन विथ दिस वाइट शेड बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. मुझे ये ब्राउनी शेड इतना पसंद नहीं है जितना मुझे ये ब्राउनी मतलब गोल्डन शेड, मुझे इतना ये वाइट पसंद है.
अब हम अपनी आईज़ पे फिर से जाएंगे, अंडर आई। अगर आप चाहते हैं, इट्स ऑप्शनल। मैंने वाइट आई पेंसिल लगाई इसलिए वो बहुत अजीब सी लग रही है, इसलिए हम ये सेम ब्रश उठाएंगे, हम ऐसा कुछ का ब्रश उठाएंगे और वही ब्राउन, ये दो ब्राउन ही हम लगाएंगे, जो एक रेडिश टाइप ऑफ ब्राउन था और एक ब्राउन था। Okay, so lastly we're gonna move on our lips, or for that we have this gorgeous lipstick by Top Lady, and this is nudish reddish, मतलब कोई बहुत अच्छा कलर है। So yeah guys, that was it for the video. I really hope you guys have enjoyed it. If you did, make sure to subscribe to my channel and don't forget that bell icon. So yeah, also like, share and comment down below #first card. You're also going to feature my next video. So yeah, bye bye, take care, stay blessed and keep watching my videos. Bye.